Okay, so what we have learned up to this in basically a special theory of relativity, we have learned basically there is a inertial frame, that frame is S, and there is another frame, that frame is S dash, and for in general uh, convenience, we can take S dash is moving with respect to S with velocity v in I cap direction. And what we have any coordinate in this space that will be x, y, z, and t from S frame. So this is from S frame, and let's say this point is P, and the same point can be visualized by x dash, y dash, z dash, and t dash from S dash. And obviously, this is my origin O dash, this is O, and this is my x dash, this is my x. X and x dash are just going to coincide at t is equal to 0. So this is very interesting thing. So, and we all know the Lorentz transformation, and this I am using the inverse Lorentz. So this x is equal to x dash plus v t dash root under 1 minus v square upon c square. Y is equal to y dash, z is equal to z dash, t is equal to t dash plus v x dash upon c square root under 1 minus v square upon c square. So this is a very interesting thing. Now let's try to do some exercise, and then we can build a general concept. Okay, so in this 4 vector, we will just first do some exercise, and then we will go for what is the actual symmetry we want to discuss in this particular problem. Okay, in this particular session, actually, not particular problem. So what we have, let's take the quantity that is ct c square t square minus x square, and you can write x square plus y square plus z square. Let's assume this is one particular quantity. What is this particular thing? We will discuss later. And we just want to transform this thing from the Lorentz transformation. So let's see what is going to happen. So if we are just going to transform it, then what will happen? This ct can be written as what? ये t क्या लिखा जाएगा? c square t dash plus v x dash upon c square whole square minus this x can be written as something like x dash plus v t dash, and obviously you can go for gamma square here by vt whole square, and you can go for gamma square and minus y dash square minus z dash square. And we all know that y is equal to y dash, z is equal to z dash. So this thing can be easily cancelled. And what we have c square t square minus x square can be written as something like gamma square c square t dash square plus v x dash upon c square upon whole square minus gamma square x dash plus v t dash whole square. So we have this particular relationship, and if you have this particular relationship, so let's try to see what is going to happen. Okay, so let's try to see what is going to happen. Clear है ना? सारा board नजर आ रहा है आपको? So I think there is some problem. Okay, so now let's try to open up this particular thing. So what will happen? This is c square t square minus x square, and obviously y is equal to y dash, z is equal to z dash, so you can easily cancel it. Let's do this whole square term. So this is equal to gamma square c square, this is t dash. So you have t square plus v square x dash square c to the power 4 plus you have cross term, that is 2
t dash into v x dash upon c square. आप देखना मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं. And negative sign is here. I am writing this thing here. You have gamma square. You have x dash square plus v square t dash square and plus 2 times x dash t dash v. So we have this particular situation. Now, what we are going to do, we will just collect time part together and this t dash part together. This is t dash square part together from here, x dash square part together, and you will see that this term will be cancelled out. Why? Because this is square is there, so this can be cancelled to this one. It has positive sign and it has negative sign, so this thing is cancelled out. Are you people comfortable with this logic? यहां तक क्लियर है ये? Yes, sir. Yes. So ये एक्सरसाइज एक बार आप जरूर करना खुद, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे क्या करना है. Anyway, so what we are going to do, we are just going to take this particular thing. So we have basically c square t square minus x square is equal to, and when we are taking this t square common, so this t square is there, and gamma square will also you will take common. So here we have c square and 1t square is here. So that value is equal to minus v square is there. Okay. And next thing, we are just going to take x dash square and gamma square common, and c square will just going to cancel out this one. So you have x dash square and gamma square common. So what you will get? V square upon c square. And here you can take x dash square gamma square common. So that minus 1. Minus 1 is there. So what I can write? I can write this whole thing as c square, or this is t dash square. So please correct it. C square t dash square. I am taking this t dash square common. You have gamma square 1 minus v square upon c square. And I can take minus sign common. So I can write x dash square. And this is gamma square. This I have just done this correction, x dash square. And this value is 1 minus v square upon c square. So when you will get this particular thing, then you have c square, t dash square, this gamma square, and this term is cancel out. This gamma square and this term is cancel out. So what you have this particular symmetry. So it's a very wonderful symmetry. Look at here. It's awesome. है ना? क्या हो रहा है? You have basically c square t square minus x square, and that value is equal to c square t dash square minus x dash square, and this is nothing but Lorentz invariant. This whole combined term is actually Lorentz invariant. And if you will go for the next extent तक भी जाओगे तो भी आप लिख सकते हो, you have c square t square minus mod r square, that value is equal to c square t dash square minus mod r square r dash square, and this mod r dash square is the spatial part, and this is your time part, and this value is invariant from one frame to another frame. So this is one of the very interesting thing. So we will also just try to see. So is that any problem? Okay. So also we are just going to try to see what is this particular quantity. इसे क्या समझ सकते हो और इसे क्या कह सकते हो, और ये क्या है इसे आप समझ सकते हो. But this is Lorentz invariant. And if you will just try to calculate this particular thing, this thing is equivalent to c square tau naught square, where this tau naught is identified as proper time
and c square tau naught square is actually proper length of this particular thing. So this is Lorentz invariant. Now let's try to go for understanding this particular symmetry. अगर आप इसको देख रहे हो तो इस पर्टिकुलर सिमेट्री को आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो वो हम समझ सकते हैं in the next discussion. Up to that, everyone is comfortable? Sir, हाँ बताओ. the last thing you have written is equal to this thing, the c square tau naught square by Yes, proper time. ये that is equal to this one. Okay, sir. That is equal to this one. So आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि व्हाट विल बी प्रॉपर टाइम. अगर एक फ्रेम पर टाइम दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी प्रॉपर टाइम. सो और वहां कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? Yes, sir. So you can easily calculate this thing. Okay. Now look at this particular 4-dimensional space. और इस 4-dimensional space को जरा समझने की कोशिश करो. और in general 4 dimension को अलग करते हैं. Hence your y is equal to y dash, z is equal to z dash. Then हम जरा x और t वाले पार्ट को ही समझते हैं और उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है. Okay. Now, if you have something like x and y, then what is your x square plus y square? ये क्या है आपका? This is your origin. और just आप प्लेन की तरह समझने की कोशिश करो. What is this particular thing? Just tell me. What is x square plus y square? This is nothing but the Length. r square, length. नहीं? अगर कोई पॉइंट है और इसके डिस्टेंस r है, this will be some mod r square, isn't it? Are you getting my point? अब Yes, sir. अगर आप इस पूरे स्पेस को आप रोटेट कर देते हो, just try to rotate it something new space, something theta से आप रोटेट कर दे रहे हो. So this will be, let's say, some theta. You are just going to rotate it. And let's say this is nothing but x dash, and this is nothing but what? Y dash. Then, can I write x dash square plus y dash square is also equivalent to r square? This length will be again same if you are going to rotate it. Nahi? And this is the beautiful symmetry. So if you have x square plus y square, and you can write this x dash square plus y dash square, that means you are just trying to something like rotation. And then only this term is going to constant. ये जो टर्म है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो टर्म है वो आपको क्या हो रहा है? इनवेरिएंट हो रहा है अंडर द रोटेशन. Now, if I am just going to replace this particular thing with two another coordinate, one is x and another is ICT, then what is this particular thing? X square plus ICT whole square. है ना? And what is this particular thing? This particular thing is x square minus c square t square. Or you can write this thing as, उल्टे तरफ से भी लिख सकते हो, c square t square minus x square. और हमने क्या देखा? c square t square minus x square is equal to c square t dash square minus x dash square, isn't it? So, is that there is some relationship between these two things? वैसा ही तो है ये. यहां से देखो, इसको देखने की कोशिश करो. You can write this thing is like this: x dash square plus I c dash square, isn't it? Are you getting my point? Yes, sir. कुछ वैसा ही तो है ये. Just replace ICT to y and you have this sort of symmetry. So this is also one sort of rotation.
एक तरह का रोटेशन आपको मिल रहा है, बट इस रोटेशन में क्या खास बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंड प्लीज यहां जो आप रोटेशन कर रहे हो, आइदर आप एक्स वाई प्लेन से देखो, प्लेन में देखो, या एक्स डैश वाई डैश प्लेन में देखो, दैट एरिया एंड द स्पेस इज जस्ट सेम। Now look at what we are going to do in this particular thing. So we have another axis, that is x dash and ICT dash. And how this axis x dash and ICT dash will look like is that it will look like something like this or something else. So let's try to see what is going to happen. So what we are going to do, a beautiful exercise. हम लोग एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमें मिल रहा है इन जनरल। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग। सपोज यू हैव एक्स डैश एंड सी टी डैश इज इक्वल टू 0 एंड 1। सपोज ये आपका 0 और 1 है, देन व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ x and ct? ये हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज माय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? x इज इक्वल टू x डैश प्लस v t डैश रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और यहां पर हमें क्या करना है, ct डैश की वैल्यू, सो दिस इज व्हाट 0 एंड 1। सो ct डैश की वैल्यू क्या है 1। सो व्हाट यू विल राइट, कैसे इसको लिखोगे? So you will write x is equal to x dash. So this value is x is equal to 0 plus what is your t dash? V upon c, isn't it? Upon 1 minus v square upon c square. So x की वैल्यू क्या आ रही है? Suppose this is beta into gamma. Okay? आ रहा है ना? x की वैल्यू क्या मिल रही है? बीटा इंटू गामा। व्हाट इज बीटा? V by C. v upon c. Okay, and what is gamma? Gamma is 1 upon root under v square upon c square. Now let's go for another thing, x dash and ct dash की वैल्यू, and what about t dash? So यहां से t dash की वैल्यू भी निकालिए। What about your t dash? क्या होगा? Sorry, t is equal to t dash plus v x dash upon c square root under 1 minus v square upon c square. What is this value? यहां पर c लगा देते हैं, यहां c लिख देते हैं। So what is your ct here? बताइए, what is your ct? ct dash की जगह पर 1 लिख लो, and this value is 0. So that value is 1 minus v square c square. That value is gamma. So बीटा गामा एंड गामा कहां पर होगा? वेयर इज योर बीटा गामा एंड गामा? सर सर v की जगह पे v by c कैसे लिखे हैं? x अरे यहां पर सी टी डैश को 1 पुट किया तो टी डैश को 1 बाई सी लिखोगे ना? ठीक है, टी डैश को 1 बाई सी लिख दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? सो अब ये देखो, ये दोनों पॉइंट आपको कहां मिलेंगे? प्लीज माइंड इट, एक्स डैश की वैल्यू 0 है और 1 है, मींस I am talking about something, or this value is positive and this value is also positive. Gamma is also positive and beta gamma is also positive. So I will get this value something, someplace like here. मिलेगा ना? Are you getting my point or not? Yes, sir. है ना? अंदर ही मिलेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा ये। Yes. And what is this point? This point is something like I सी टी डैश। यही तो मिल रहा है आपको। एक्स डैश की वैल्यू क्या है? 0 एंड टी सी टी डैश की वैल्यू क्या है? 1। सो दिस वैल्यू इज 1 हियर
and 0 here, that means it is in the line of ICT dash. ये समझ पा रहे हो आप? भाई ये दोनों पॉइंट मैंने रखा है, इसका क्या मतलब है? That is, I am talking about y-axis. So my y-axis in a frame of this will look like this in the t dash frame. Now do this exercise in a reverse matter. रिवर्स में इस एक्सरसाइज को करो, फिर देखते हैं क्या होता है। सर हाँ बोलो। फिर एक बार बता दो दोबारा से ये पॉइंट। अरे बाबा, ये जो पॉइंट मिला ये क्या मिला सर बताओ? बीटा गामा और गामा मिला। यस सर, बीटा गामा और गामा मिला। किसके रेफरेंस में मिला? किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मिला? ये एक्स एंड आईसीटी के लिए। एक्स एंड आईसीटी के लिए। उसी को आप क्या कह रहे हो? 0 और 1 भी तो कह रहे हो। ओके यस, फॉर एक्स डैश एंड टी डैश के लिए, है ना? तो टी डैश तो ऐसा ही जाएगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी पॉइंट को तो ये 0 1 कह रहे हो ना। अरे बाबा, जो पॉइंट 0 1 है वही पॉइंट तो ये भी है। यस सर। तो ये पॉइंट 0 1 होने का क्या मतलब है कि आप y एक्सिस में जा रहे हो ना। यस सर, इसी कारण मैंने ये लिख लिया इसको। ओके सर, ठीक है, ओके। चलो फिर से एक्सरसाइज करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, x और ct को, पिछले बार क्या लिया था? 0 1 लिया था ना। अब 1 और 0 ले लो, बताओ क्या होगा? x इज इक्वल टू x डैश प्लस v t डैश रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो x डैश की वैल्यू क्या पुट की है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा। चलो, और t की वैल्यू क्या हो गई? t डैश प्लस v x डैश अपॉन सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी डैश की वैल्यू क्या है? 0। टी की वैल्यू क्या है? 1, है ना। सॉरी, सी टी डैश की वैल्यू क्या है? 0। तो हमें सी, तो हम देख लेंगे। तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी टी, सी को यहां पर ले जाओ, दैट वैल्यू इज v अपॉन सी रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज बीटा गामा। हो रहा है ये? और ये कहां मिल रहा है आपको? 1 0। On for x-axis we will write that. Sorry, this is nothing but x dash and t dash, है ना? This is x dash and t dash. Are you getting my point? So x और t में ये कहां मिल रहा है? यहां कहीं मिलेगा? Yes. So this is my x dash frame and this is my ICT, and you will easily calculate that this angle theta and this angle theta will remain same. So what is going to happen? क्या हो रहा है आपका? आप क्या देख रहे हो पूरी चीज को? जो आपको x और ICT में दिखाई दे रहा था, वही चीज x डैश और ICT में क्या दिखाई दे रहा है? स्पेस आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपके लिए कितना स्पेस अवेलेबल है x और ICT में? ये पूरा स्पेस अवेलेबल है x और ICT में, इजंट इट? लेकिन x डैश और ICT में क्या अवेलेबल है? आपको जस्ट ये स्पेस अवेलेबल है। दिस इज इन डैश स्पेस। दिस इज योर x और ICT। दिस इज योर x and ICT dash, x dash and ICT dash, isn't it? So now you can see, और जैसे जैसे आप वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे, as you will increase velocity, these two point will merge and that angle will be 45 degree, और उस समय आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Your velocity will be nothing but speed of light. So you don't have any space itself. So this is all about space time symmetry. In general, जो हम स्पेस के अंदर जो हम रोटेशन कर रहे हैं, उस रोटेशन में क्या हो रहा है? एक्स डैश अगर राइट की तरफ, सॉरी, इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, सो वाई डैक्स भी क्या हो रहा है? आपका एंटी क्लॉकवाइज ही मूव हो रहा है, isn't it? But look at what is going to happen if
x dash is moving in this direction, then this is also moving in this direction, isn't it? Are you getting my point? So क्या होगा, जो आपके पास अवेलेबल स्पेस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. So 4 vectors is the very interesting thing. वो इन जनरल जो आपके पास स्पेस है उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, जैसे जैसे आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है. ठीक है. सो हाउ योर थिंग विल लुक लाइक, आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे देगा एक्स और टी में, आपको बोलेगा वो कोऑर्डिनेट एक्स डैश और टी डैश में कैसा आपको दिखाई दे रहा है. यू कैन इजिली राइट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. एवरीवन इज कंफर्टेबल अप टू दिस? यस सर. ठीक है. ओके. नाउ अब ये जो आपने सिमेट्री देखा है, और सिमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर आप सिमेट्री को देखोगे तो आप थोड़ा सा फिजिक्स की इंटरनल ब्यूटी को समझने की कोशिश करो. और फिजिक्स की इंटरनल ब्यूटी क्या है, वो ये है कि हमारे पास, अगर मैं बात कर रहा हूं 4 वेक्टर्स की, तो हमारे पास एक स्केलर पार्ट है टाइम, और दूसरा कौन सा पार्ट है, स्पेस का पार्ट है आर. एंड दिस आर एंड टाइम will just tell you all about your 4 vectors. So we have something like, और इसे हम क्या कर रहे हैं, ICT. तो जब भी आपको इस तरह की कई ऐसे चीजें मिलेंगी, कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिसके बीच में आपके पास है इनवेरिएंट लॉ. एंड व्हाट इज दिस इनवेरिएंट लॉ, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस mod r square. So whatever with this type of invariant law, or you can write it in different form. Suppose I am writing some vector A, and this vector has 4 components, and one is the scalar part of this particular component and another is a vector part of this particular component. Okay. और यहां पर मैं स्पेस, आप इसको कैसे दिखाओगे 4 वेक्टर्स को, is very difficult to show. Just write something like this: ax, ay, az, or a1, a2, a3 is much better. a1, a2, a3. And this is your 4 vector. And if you are going to calculate the mod a square, then what is this mod a square is equal to a naught square minus a1 square plus a2 square plus a2 square a3 square. And this thing is just going to remain invariant in any inertial frame, or they are also invariant in mainly, that is invariant under Lorentz transformation. And here I am just talking about c is equal to 1. मैंने यहाँ c is equal to 1 लिया. Otherwise you have IC type of thing is there. Okay. This is your scalar part and this is your component of vector. जैसे r के कितने कंपोनेंट होंगे, just tell me. 3 component x, y, z. Yes sir. Yes. And now look at, if you have this sort of information, then look at one very beautiful expression in your special theory of relativity, and you have this E square is equal to P square, and this P square is nothing but mod P square plus m naught square C4, isn't it? And I can rearrange this whole equation. This is E square minus P square, and this is C square also. So minus P square C square is equal to m naught square C4. And what I can do, I can divide each and everything with your C square. Then you have E upon C square into whole square into C square minus mod P square is equal to m naught C square, isn't it? ऐसा लिख सकते हैं इसे, जरा ध्यान दो. Are you getting my point? ऐसा लिख सकते क्या नहीं?
And this thing is nothing but c square into tau naught square. And what is this tau naught? That is proper time, and which will be always uniquely measured. And now if you have this particular thing, what is m naught? What is m naught? ये क्या है? Not square होगा. Sorry? Not square mass here. M naught square. So that is m naught. What is this m naught? Rest mass. Rest mass, and which is also invariant with any reference frame, any inertial frame, isn't it? So Yes. what we have, I have one another symmetry for the momentum and energy, isn't it? और यहां भी आपके पास मिलेगा c square, and we can write, and you can write E upon c square is nothing but what? Relativistic mass. लिख सकते हो ना? E upon c square is what? M, relativistic mass. But I am writing it in form of energy. So this c square minus mod p square is equal to c square E dash upon c square minus p dash square must be equal to m naught square c4. So here you can see and again you can see this momentum is what? Vector quantity or a scalar quantity? Vector quantity. Vector quantity. This energy is a scalar quantity or vector quantity? Scalar quantity. Scalar quantities. Here R is vector quantity or a scalar quantity? Vector quantity. Vector quantity. Time is a scalar quantity or vector quantity? Scalar quantity. Scalar quantity. And now look at the symmetry. आपने पढ़ा भी होगा डेल्टा x into delta px. कुछ uncertainty principle में इस तरह पढ़ा था? Yes. And similarly, you have talk about delta E into delta T, isn't it? ऐसा पढ़ा था ना? Yes, sir. So now you can see in a Fourier space, you can relate to x to px, you can relate E to T. This is one of the beautiful symmetry. Energy and time, energy का Fourier space time में होगा, and energy is something you can compare with the frequency. So if Yes, and you can have x to px, you have position, you have vector quantity, and they can be also easily have some sort of beautiful symmetry. You can just feel this symmetry. What is meaning of that? Meaning of that, if any quantity have this sort of symmetry, and if that quantity will follow the basically Lorentz invariant in this form, there must be some Lorentz transformation. Are you getting my point? Yes. There must be some Lorentz transformation. So yes, there is Lorentz transformation for energy as well as for momentum. So let's try to go for writing the Lorentz transformation for energy and momentum. Okay, so let's try to go for this. यहाँ तक clear है ये? Yes, sir. Okay. सर मुझे फर्स्ट टर्म पता नहीं चल रही सर, कैसे हो रहा है ये? क्या हो रहा है मतलब? सर सिर्फ ये चीज, ये सी स्क्वायर आपने सी स्क्वायर के साथ डिवाइड किया और अरे भैया कर लो ना, सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करो, ये सी स्क्वायर चला गया, यस सर, यहाँ पर सी स्क्वायर आ गया, यस सर, एक और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां भी सी स्क्वायर आ गया, C4 हो गया। ओके ओके ओके, C4 है सर। ये क्या है? तो बच्चे वाली चीज है, करने की कोशिश करो ना साथ साथ। ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ले रही थी, ठीक है सर। So what you have this sort of symmetry, और ये जो सिमेट्री आप देख रहे हो, हमने क्या सिमेट्री देखा था? S frame है and there is S dash frame and this S dash frame is moving with velocity v. So you have x is equal to x dash plus vt dash upon root under 1 minus v square c square. Y is equal to y dash, z is equal to z dash, and t is equal to t dash plus v x dash upon c square root under 1 minus v square upon c square. And if it is it is the basically Lorentz transformation,
Then we can write the Lorentz transformation for momentum also. And what is this Lorentz transformation for momentum is px is equal to px dash plus v. और आप t dash को किससे रिप्लेस करोगे? एनर्जी e dash अपॉन c स्क्वायर से. प्लीज आप ये तो देखो क्या है हमारा सिमेट्री. c स्क्वायर एंड दिस इज e स्क्वायर टू द e बाई c स्क्वायर का होल स्क्वायर है. तो टाइम को किससे रिप्लेस करोगे? ई बाई सी स्क्वायर. e upon c square. So this is one of the catch in this particular thing. And this value is equal to root under, and this is minus v square c square. And yes, it is in the I cap direction. This is my x cap direction. You have this. So this is from S dash frame, and this is for S frame. So what about py? Py dash. What about pz? Pz dash. And now time की जगह पर क्या लिखे? What I have to write in for the time? ई बाई सी E upon c square. बताओ क्या होगा? ई डैश अपॉन सी स्क्वायर Very good. E dash upon c square प्लस वी बाई plus स्क्वायर पी v एक्स upon सी स्क्वायर c square पी एक्स डैश px dash by गामा. root under 1 minus v square c square. ये सिमेट्री के कारण यहाँ क्या हो रहा है? c स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है. तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है E इज इक्वल टू ई डैश प्लस वी पी एक्स डैश रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर. ये आपके एग्जाम में आ चुका है फॉर्मूला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. यस यस ओके. सो नाउ यू कैन. और अगर आप इधर डैश लिखते हो तो क्या होगा? दिस प्लस साइन विल चेंज टू व्हाट? माइनस साइन, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं px लिखूं और px डैश लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये दिस इज योर px माइनस v e अपॉन c स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. So you can change some, just v will change to minus v. We have done all this story earlier. So ये अगर सिमेट्री मिलता है तो यहां से हम डिराइव कर सकते हैं a Doppler effect in a light. So let's try to go for a Doppler effect in a light. ठीक है. So next class आपकी कितने बजे से है? चलो. So I think I will take next 10 minute more. या फिर उससे ज्यादा भी. 8:15. 8:15 है. So we have just finished. क्या करूं? आगे बढ़ाऊं या रहने दूं? कल करेंगे. सर मैथमेटिकल की क्लास शायद कैंसिल हो गई. मैथमेटिकल क्लास कैंसिल है. ओके. No, Let's- sir. It was. Oh, he will not take the class, so I will continue it. Okay, good. So Alok sir is in traffic actually, and there is heavy rain in Delhi also. Okay, so let's try to go for understanding of Doppler effect. Doppler's effect. So I will take next 15 to 20 minutes. Okay, so this is your Doppler effect, Doppler's effect. Okay, now. So first try to understand the notation. ये बहुत interesting है. So there is a source of light. Okay. And this source of light is moving with respect to, this is your source, okay? Moving with respect to some observer. And this, the light is emitted with angle theta naught. And the velocity of light is always c. So this theta naught is measured by, and the frequency of light is nu naught. So who is going to measure nu naught and theta naught? Who is going to measure it? It is measured by observer who is rest with respect to source.
एवरीवन इज कंफर्टेबल? ठीक है ना? यस ठीक है। ये कौन मेजर कर रहा है? नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर कौन कर रहा है? ये ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे जो रेस्ट पे नहीं है, जो सोर्स के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। ओके, एंड नाउ देयर इज अनदर ऑब्जर्वर एंड ही इज गोइंग टू मेजर, एंड दिस, यहां पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए। नाउ लुक एट द सिचुएशन। The source is moving with velocity v, and this angle is appeared to observer is theta, and this frequency is measured by him is gamma. Okay, so now what is, sorry, nu and theta? What is nu and theta? Nu and theta क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी और एंगल जो वो ऑब्जर्वर Measured by whom? Observer for which the source is moving with velocity v. Measured by observer, measured by observer, where source is moving with respect to observer. Okay, now, so gamma and theta, I can say this is what? Apparent thing. This is not actual. This is what? Apparent. Are you getting my point? गामा और थीटा क्या है? apparent है या actual है? Apparent thing to the observer. Okay, now this nu naught is a actual thing or apparent thing? Actual thing. Okay, so now what we have this particular formula. So I am using this one. E dash is equal to E minus px upon root under 1 minus v square c square. And can I say this theta angle is the angle between v and c also? ठीक है ना? क्योंकि जो भी रेडिएशन है वो तो c स्पीड से जाएगी। आर गेटिंग माई पॉइंट? v भी होगा ना? हाँ, सॉरी, e माइनस v px। E माइनस वी पी एक्स, हाँ v भी होगा, वी पी एक्स। ओके, E माइनस वी पी एक्स। ओके, चलो, नाउ आई कैन से दिस इज माई S फ्रेम एंड दिस इज माई S डैश फ्रेम। कह सकते हो इसे? S के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है? मूव हो रहा है, तो सोर्स को हम क्या कह सकते हैं? S डैश फ्रेम कह सकते हैं। ऐसा ही तो देखते हो, S के रिस्पेक्ट में ये मूव हो रहा है, तो सोर्स को आप क्या कह सकते हो? S डैश फ्रेम। और ऑब्जर्वर कहां पर है? S फ्रेम पर है। ठीक है, सो E डैश की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए? एनर्जी के टर्म में, अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो व्हाट इज योर E डैश? एच न्यू नॉट। H न्यू नॉट तो पता है आपको, रेडिएशन की बात कर रहा है ना? व्हाट इज E? H न्यू। जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो कितना फ्रीक्वेंसी देख रहा है? न्यू फ्रीक्वेंसी देख रहा है, दैट इज H न्यू माइनस V, एंड व्हाट इज दिस? px। px की वैल्यू क्या होगी? H न्यू अपॉन C cos थीटा, है ना? x डायरेक्शन में तो यही मिलेगा आपको मोमेंटम। टोटल मोमेंटम क्या होगा उसका? H न्यू बाई C, P E इज इक्वल टू PC, पता है ना आपको? इज इक्वल टू PC, P इज द मैग्नीट्यूड,
उसका x की डायरेक्शन में जो एंगल होगा दैट इज cos थीटा, बिकॉज दिस इज योर apparent एंगल, एंड हियर you can have 1 minus v square upon c square root under this. So you can easily cancel this all h, and you have this frequency is equal to nu naught root under 1 minus v square c square, and that is 1 minus v upon c cos theta. So this is the apparent frequency measured by observer, who is going to see the frequency which has original frequency nu naught is coming with the angle theta. जो ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर को किस एंगल से, सॉरी किस फ्रीक्वेंसी से चीजें दिखाई देगी, न्यू से या न्यू नॉट से? जो use न्यू से दिखाई देगी, और उसे एंगल कितना दिखाई देगा? थीटा। थीटा। वेरी गुड। उसे एंगल कितना दिखाई देगा? थीटा। सो थीटा जो यहां पर है वो कौन सा है, एपरेंट है या फिर एक्चुअल है? एपरेंट है। और न्यू नॉट क्या है, एपरेंट है या एक्चुअल है? actually एक्चुअल। सो ये जो फॉर्मूला है उसमें आप ये ध्यान दोगे, न्यू नॉट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स और थीटा विथ रेस्पेक्ट टू, थीटा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ऑब्जर्वर। याद है हम लोगों ने एक प्रॉब्लम भी किया था जिसमें एस डैश के रेस्पेक्ट में थीटा नॉट एंगल से जाता है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम थीटा एंगल से देख रहे थे, और थीटा नॉट के बीच में हमने रिलेशन भी निकाला था। रिमेंबर ऑल दिस थिंग? yes sir. एक प्रॉब्लम किया था, ठीक है। अब जरा सा इसे ओपन करते हैं और देखते हैं एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एंड दिस इज योर मदर फॉर्मूला। अब हम लोग इस फॉर्मूले को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस। क्लियर है ये? So what you have, case 1, theta is equal to 0. कैसा पिक्चर बनेगा? सपोज यहां पर ऑब्जर्वर है, थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? मीन्स V और along लाइन, V और C दोनों लाइन में है लेकिन पैरेलल है, और V किसका है? सोर्स का। देखो लाइट तो चारों तरफ से जाएगी, है ना, लेकिन ऑब्जर्वर यहां है तो इसके पास ये वाली लाइट पहुंच रही है और उसी डायरेक्शन में सोर्स भी मूव कर रहा है। सो व्हाट विल बी इन दिस केस? थीटा इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज न्यू? न्यू नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 माइनस वी अपॉन सी। क्या वैल्यू हो जाएगा? सो दिस वैल्यू इज न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस वी अपॉन सी, 1 माइनस वी अपॉन सी। एग्रीड? हो जाएगा ना? यस। सो व्हाट इज न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है। सेकेंड केस, इफ थीटा, ये हमने किस केस के लिए किया? थीटा इज इक्वल टू 0। यहीं पर मैं सारा लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 0, एंड इन दिस केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, व्हाट विल हैपन? Just the inverse of the previous case. भाई लाइट तो इसकी तरफ दिखाई देगा ही, एंड दिस इज योर V, दिस इज योर सोर्स। सो व्हाट यू विल गेट? थीटा इज इक्वल टू पाई, माइनस माइनस प्लस साइन, so you will get nu is equal to nu naught 1 minus v upon c, 1 plus v upon c. Okay, now what will happen to theta is equal to pi? Means you are just at this point, light is coming like this and this is moving and this angle is 90 degree. What is this? Nu is equal to nu naught 1 minus v square upon c square. These two are known as longitudinal Doppler effect.
longitudinal. This is also longitudinal. ये लगभग उसी तरह का जैसा साउंड का है, बट फॉर्मूला इज डिफरेंट, वहां रूट वगैरह नहीं आता है. बट दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट. ये वाला केस साउंड के लिए पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज योर ट्रांसवर्स डॉपलर effect. This is your transverse Doppler effect. And for any particular angle, इस एंगल में V ऐसे जा रहा है, and this is your theta. यहां पर भी हो सकता है V ऐसे जा रहा है, and this is your theta. Okay. So in this, all these case, when theta is between 0 to pi by 2, you will find nu is greater than nu naught. So when theta is between 0 to pi by 2, nu is greater than nu naught. And in this case, when theta is between pi by 2 to pi, nu is less than nu naught. And this is your picture of Doppler effect. है ना? And this is in the line. This observer and source are in line. Something like this, okay? But this is not in line. Observer here, it is moving like that, and radiation is coming like this. And this is your transverse Doppler effect. So this is a very interesting thing, and this is basically known as what? Doppler effect. Clear है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. But फिर से, what is nu naught? Actual frequency. जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है, जो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज योर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. एंड व्हाट इज योर थीटा? एपरेंट, जो ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है. ओके. बाय द वे, व्हाट इज योर वी? वेलोसिटी ऑफ सोर्स. वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर डॉपलर इफेक्ट. आई थिंक अब आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो. क्लियर है ये? ओके. सो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं. कल हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे, एंड आई विल ऑल्सो गो फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 4 वेक्टर्स. करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इनकी भी 4 वेक्टर्स होती है. एंड वी विल ऑल्सो डू लिटिल बिट ऑफ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. And we will also try to do some problem also based on this Doppler effect. एक बार आप इसको करो और PYQ करने की कोशिश करो. ओके? सर 4 वेक्टर की एक प्रॉब्लम भी कर लेंगे हम, जो आज 4 वेक्टर्स वाला केस किया हमने. ये सब 4 वेक्टर का ही प्रॉब्लम हो गया ना एक तरह से. सब तो वही चीज यूज कर रहे हो, उसकी भी प्रॉब्लम कर लेंगे. ठीक है? ओके. अभी 4 वेक्टर पर आपके एग्जाम में वैसे प्रॉब्लम आ नहीं रहे हैं जो बहुत इंटेंस है. जस्ट अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो वो भी कर लेंगे. ठीक है? बट डॉपलर इफेक्ट आप तैयार करके जाओ, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. ठीक है ना? और प्रीवियस ईयर के जरूर क्वेश्चंस करो. जेस्ट में पिछले के साल बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया था. इनफैक्ट नेट में भी 2 साल पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है. सो जस्ट यू कैन ट्राई टू डू दिस थिंग. ठीक है? कल हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है? थैंक यू.